Hello friends, welcome back to my channel and thank you so much. I got so many messages and from friends and from the people who are following me on my Instagram, um, all the well wishes and blessings and whatnot. Thank you so much. Yeah, it's a little heavy situation, and I believe I'm handling it well. Yeah, there are times when I am, disappointed in life, but then there are times when I feel I am blessed. Whatever God has given me so far, no complaints, and truly grateful for all the kind of support I'm getting, even from the doctors and the people around me. And this is truly the time when I can literally see who is, my support and who is just not my support or fake people, but ठीक है, it's life. So अभी क्या हो रहा है कि I found an oncologist already, so but he's giving the surgery date in sometime in January, and my parents wanted that I get the surgery done before Jan, sometime in December. So उसके लिए I'm looking for another oncologist. वो चल रहा है, finding oncologists, calling them if they have the available appointments and things like that. It's a lot of process, but the good thing is that my blood pressure has become better, and my hemoglobin has gone far better. It was 7 and now it's somewhere in 9. With medicine and of course mummy के हाथ का खाना. My parents came to US to look after me. तो काफ़ी अच्छी हेल्थ हो गई है, पहले से बेटर हो गई है. वो कहते हैं ना क्या, बकरे को हलाल करने से पहले उसको खूब खिलाया जाता है. तो वो चल रहा है, लिटरली वही सिचुएशन चल रही है. एंड दीज डेज आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, सो समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ खाना है, विच इज़ लाइक वन ऑफ द थिंग मैं उससे भागती थी दूर. आई एम वेरी मच लाइक कि मुझे सिर्फ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाने हैं एंड ऑल द हेल्दी स्टफ. और एक रोटी से ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, मैं रोटी बिल्कुल ही नहीं खाती थी. सो बट मम्मी आई हैं तो खिला रहे हैं, so that I can put on some weight and I am healthy, more healthier for my surgeries. Let's see क्या चलता है. और इस बीच में there's this emotional journey as well, so ऐसा लग रहा है कि बच्चों को और happiness दी जाए. So for the people who have been following me, they know that I've been going through the separation and everything. So although the father of my children doesn't talk to kids, and yeah, लोगों को बोलता है कि बहुत ट्राई करता है ना, खुद ही ब्लॉक करके रखता है अपना फ़ोन so that he doesn't have to support in any ways, and he was just trying to show his power. But सब कुछ चीज़ साइड में रखे हमने सोचा कि बच्चों को बात कराई जाए, बट बच्चे बात करना नहीं चाहते हैं. और ट्राई भी किया काफ़ी, तो बच्चों ने काइंड ऑफ उसकी बहुत सुनाया उसे, है ना. और वो उसका अभी भी उसकी मैनिपुलेशन ही ख़त्म नहीं होती. ऑल वॉट ही वॉज ट्राइंग राइट नाउ एज वेल कि मुझे इंडिया बुलाया जाए और मैं वहाँ पे मेरी सर्जरी कराई जाए. वेयर इज़ the doctors, especially in the cancer case, it's very nice in America. So I'm at the right place, right time, I would say. But बच्चों को फोर्स कर रहा है, बहुत ही छोटी बात ऐसे कर रहा है कि I'll give you $10,000 in hand, but
to my kids, right? कि आ जाओ यहाँ पे, and they were like started laughing that you should be providing, you haven't been providing for more than 2 years now, and what are you talking about? So like this is very I don't know the term, but at least एक बच्चों को उनका हेल्दी वे में एक्सप्रेस करने के लिए एंड दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ये सब साइड में चल रहा है, सो दैट दे ऑल्सो हील फ्रॉम वट एवर हैपन इन द पास्ट. एंड by end of the day I definitely feel so much heaviness because of whatever is going on. It's so unpredictable, and the journey is tough, but क्या कर सकते हैं यार. Yeah, sorry, it got cut, call आ गया था. So yeah, by the time like in the evening time usually I feel anxiety, so I do meditation. उससे थोड़ा शांत रहता है मन, और पॉजिटिव साइड देखती हूँ लाइफ की कि कितने लोगों का अभी सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और ये जर्नी है. आई स्टिल फील ब्लेस्ड, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ बहुत कुछ लाइफ में हो जाता है, एंड हमें लगता है कि अरे उनके साथ हुआ, उतनी कभी फील नहीं कर पाते हैं, बट जैसे अब ये मेरे साथ जो लास्ट 2-3 सालों से हो रहा है, आई फील कि माई गॉड, आई हैव बीन सो ब्लेस्ड थ्रू आउट माई चाइल्डहुड. इतने हेल्दी पेरेंट्स मिले मुझे, माइंडसेट वाइज भी, और सब कुछ जो एक बच्चे को चाहिए होता है वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था, एंड मे बी दैट वाज द रीज़न वाई आई वाज सो पॉजिटिव इन लाइफ, एंड मुझे कभी ऐसे jealousy नहीं फील होती. एंड देन आई सी द पीपल, वाई द पीपल आर jealous, then because now I know, because they don't have it, they have never experienced that kind of love, compassion from their parents, or whatever they desire, they get it from their parents. So I feel that was one of the things which shaped me even today, and I truly feel कि भगवान जी ने मुझे बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ दी है, एंड आई एम ट्राइंग कि मेरे बच्चों को भी मैं वो दे सकूँ, और वो एक अच्छे इंसान बने दोनों के दोनों. सो दिन भर भागदौड़ी रहती है, कि कभी डॉक्टर के चक्कर, कभी मेडिकल इंश्योरेंस, और फिर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट what I can from the system. तो वही चल रहा है, और बट बहुत ही अनसर्टनिटी है लाइफ में. फर्स्ट टाइम होता है ना कि आप देख ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन माई हैंड, दिस इज़ ऑल इन यूनिवर्स हैंड. तो ये काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन है कि आई माइट बी रिपीटिंग माई सेल्फ, बट you can't see the future, so it is giving me more anxiety, because I have always shaped my life thinking कि मुझे ये करना है तो उसके लिए क्या steps होंगे, and now this is like something beyond my expertise. और बट बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं कि ये अब खाओ, वो ये खाना है, ये छोड़ दो, so that the body is more capable of fighting this disease. And so I'm following that. I always have very disciplined life when it comes to my health and my body, my mindset. So अच्छी गाइडेंस आ रही है, और आपको भी कुछ अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताएं, बिकॉज आई ट्रूली नीड गाइडेंस this time. Message me on Instagram. But yeah, as of now it's going okay, and बाकी मैं और वीडियोस में बताऊंगी और क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है. Thank you. Bye.